So please, someone, can you please confirm that screen is shared? Today we are going to discuss about the PMCQs with respect to the pharmaceutics subject. So I hope screen is visible and my audio is also clear. So by consideration, let's start on solving MCQs that are with respect to the our mock tests in of the academy. The first question is with respect to the defect occurs when the film's internal pressure exceeds the tensile strength of the film in tablet coating is known as mock number 10 से ये question है. So options are orange peel effect, blistering and cracking. If you see the options carefully, you will see the orange peel effect, then blistering and cracking. इसमें से अगर आप देखना चाहोगे तो you have to look for the questions area. अगर आप question check करोगे तो basically question is tablet coating से है. There are different coating defects that are observed in during the tablet coating process. So we'll discuss what are the defects that are observed normally and what is the definition of every defect that we see. अगर आप orange peel effect देखोगे, if you want to see the orange peel effect is with respect to the inadequate spreading of the solution, that is tablet coating solution. If you want to define this effect, तो इसकी वजह से आपका जो appearance होता है, that appearance becomes the bumpy. Okay, so orange pill is because of the inadequate spreading of the coating solution. That is not the right option. The second option provided, that is the blistering. Blistering is happen due to the rapid evaporation of the solvent on the film. जब आप film coating कर रहे हो तो जो solvent आपने use किया है, अगर उसका आपका inlet temperature ज़्यादा रहेगा machine का, in that case there might be chances कि solvent का आपका जो है वो rapid evaporation हो सकता है. Rapid evaporation होने की वजह से आपकी जो film है वो uniform नहीं होगी, उस पे spots दिखने के chances ज़्यादा है. You see the third option, that is cracking. Cracking is the right option. And how do we define the cracking? Is nothing but the, if our internal stress in the film exceeds the tensile strength, उस केस में आपको इंटरनल स्ट्रेस की वजह से आपका फिल्म ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस है. So this phenomenon we define as a cracking. So if you see the MCQ, they have clearly provided that the film's internal pressure exceeds the tensile strength of the film in tablet coating. So the right answer for this option is a cracking. Okay, apart from this blistering, orange peel and cracking effect, the major effects that we observe in the tablet coating, I'll just let me enlist some of the effects. That is taking is also observed, that is with overweighting or excessive film tackiness हो सकता है उसमें. Then picking, that is with respect to the अगर आपका film जो है वो अगर pan का देर होता है तो that might be the chance. Then cratering, जहाँ पे आपके film पे crater हो सकता है. This is also one of the major effect that we observe. Apart from that, roughness, that is because of the increase in the pigment and polymer concentration. Then orange peel is all coated. Then breaching, that is decrease in the plasticizer content. That is one of the again major defect. Then blistering we covered. Then dull film or bloom, that is with respect to the high processing temperature. अगर हमारा इनलेट टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहाँ पे हो सकता है. Then color variation, वो भी है आपका. अगर वो इम्प्रॉपर मिक्सिंग है या अनइवन स्प्रे पैटर्न है या इनसफिशिएंट कोटिंग रहोगा तो इन केस में कलर वेरिएशन आपके टैबलेट के फिल्म कोटिंग पे
या टैबलेट की कोटिंग पे दिख सकता है. सो यस, द राइट ऑप्शन इन दिस फॉर दिस क्वेश्चन इज cracking is the right option. Okay, let's move to the next question. That is the ratio of dry gelatin or dry glycerin in the medium gelatin capsule is. Option A is 0.4 to 1 percentage, then 1 is 2.6, option B, then option C is 0.8 to 1, and 1 to 0.8 is option 4. Okay, अगर आप इसको देखोगे तो that is with respect to the shell hardness. अगर आपको shell कितनी hard करनी है या कितनी soft करनी है, that will be decided based on the composition or concentration that we are using during the formation of this capsule shells. तो अभी इसमें आपकी तीन चीजें आती है. फर्स्ट वन इज हार्डनेस दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट, अपना टारगेट क्या है. देन उसके बाद रेशो, द रेशो इज विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन एंड ड्राई जेलाटिन, ग्लिसरीन टू जेलाटिन, एंड देन यूसेज. मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की जो कैप्सूल शेल आप बनाते हो कहाँ पे यूज होने वाली है. Like let me take the first example. It is the hard, suppose आपको hard capsule बनानी है, so in that case you have to provide the or maintain the ratio of 0.4 as to 1, and the usage of this is majorly for the oil based products, जहाँ पे आपकी फॉर्मुलेशन जो ऑयल बेस्ड रहेगी तो उस केस में आप यूज कर सकते हो ये हार्डनेस वाली. और जो इंटेंडेड एरिया है दैट इज हॉट और ह्यूमिड एरिया, in that case also you can use this high shell hardness capsules. Second one is a medium shell और मीडियम स्ट्रेंथ. उसके लिए आपका जो रेशियो लगता है ग्लिसरीन टू द जेलाटिन इज 0.6 as to 1. The application of this tablet is with respect to the temperate area. You are targeting this area to prepare this like we are preparing this target by considering this temperate area as a target area. And if you consider the soft gelatin or soft hardness, in that case we have to maintain the ratio of 0.8 as to 1, and this is with respect to the cold and dry area. Yes, so क्वेश्चन हमें जो पूछा है, तो रेशियो ऑफ ड्राई जेलाटिन टू ग्लिसरीन इन द मीडियम जेलाटिन, अगर मीडियम आप देखोगे तो द ऑप्शन इज 0.6 as to 1. So 0.6 as to 1 is observed under the point option B. That is, 1 is the ratio of the glycerin as well as the 0.6. Sorry, 1 is the ratio of the gelatin and 0.6 is the ratio of the glycerin. So B option is the right option for right answer for the this question. So again, hard और soft gelatin के भी ratios आप ध्यान में रखो. 0.4 as to 1 है और 0.8 as to 1 है. मीडियम के लिए अगर कंसीडर करो तो 0.6 as to 1. So option B is the right answer. Okay, so let's move to the next question. That is the term used to describe the settling of an aggregated system and refers to the descending of boundary between the sediment and a clear supernatant above. आपका supernatant clear above open हो रहा, मतलब above top पे दिख रहा है. यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है between the sediment and the clear. So again, this is a factual question. Oswald Rafting is the right answer for this question. Okay, let's move to the next one. That is dash dash D is the dimensionless quantity. अब ये भी again this is a factual question. So porosity is the right answer for this. Tortuosity is not the answer. Both nahi hai, and none of the option is also not available. So quite easy question hai. If you look at the only two options you have to think about. So yes, porosity is the right answer. Let's move to the next question. At a critical temperature, the surface tension of the liquid is. So critical temperature पे आपका surface tension जो होता है liquid का, that is becoming the 0. So again, this is a factual question. You should know about the critical temperature, जहाँ पे आपका कोई भी गैस फिर से again liquid में convert होने की chances बहुत कम है. तो जब आपका critical temperature कोई भी liquid का अचीव होते हैं तो उस केस में आपका जो surface tension है that becomes the 0. Okay, so again this is the one factual question only you need to consider about. So option C is the right one. It does not increases, it does not change, or it becomes negative. तीनों के options में qualify नहीं होते. Option C is the right one. Question number 6. Plants get water through the roots because of. Option A is the capillarity, option B is the viscosity, option C is the gravity, and option D is the elasticity. Gravity तो वैसे भी by default नहीं आएगा because आपका against the towards the sky है, top को आपको movement करना है from the bottom to the top or to sky. So gravity will not be the option. Elasticity is also not the option.
विस्कोसिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है वहां पे, कुछ भी हम कंसिडर नहीं करते. सो जस्ट दिस इज क्वाइट लॉजिकल क्वेश्चन दैट द प्लांट गेट वाटर टू द रूट्स बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन. जो उसकी जो रूट्स होते हैं वहां पे अंदर की आप जो वेसल्स अगर देखोगे तो दैट विल वर्क ऑन द capillary principle. Not only the water but also other nutrients will be transported through this phenomena only up to the tip of the plant leaves. Okay, so right option is A, that is capillarity is the answer for getting the water through the roots. Let's move to the next one. That is question number 7. The bloom strength of gelatin of the capsule is directly proportional to. Bloom strength ये क्या है आपका, gelatin जब भी आपका बनेगा तो वो gelatin की strength क्या है, उतनी उसकी capacity कितनी होती है. Last time also we have discussed during the lecture discussion about this part, that is a bloom strength. और ये कैसे calculate करनी है, उसकी process क्या है, उसको बनाने के लिए आपको कौन सा gelatin solution बनाना पड़ेगा. That is 6% weight by weight solution हम उसको बनाते हैं. And then आपका प्लंजर कितना डीप होना चाहिए और कितनी वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस उसने अचीव करना चाहिए. तो दैट वी हैव डिस्कस्ड. एंड the right answer option A is provided molecular weight, option B is molecular chain length, solubility of gelatin and force involved in gelatin molecule. So अगर आप देखोगे तो इसमें से the right answer for this question is with respect to the molecular weight of the gelatin. जितना आपका molecular weight ज्यादा रहेगा उतने अपनी की bloom strength ज्यादा रहती है, आपका gelatin उतना ही ज्यादा strong हो जाता है. So molecular chain length या solubility of gelatin or forces involved in gelatin molecule are not the suitable option for this. The molecular weight is the right answer for this question. Okay, let's move to the next question. That is the HLB values of detergents are in the range of, option A is 13 to 16, then option B is 8 to 16, option C is 7 to 9 and option D is 3 to 8. अभी इसके लिए HLB वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए और कौन से कैटेगरीज के डिटर्जेंट्स या सर्फेक्टेंट्स हम बोल सकते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से और हर एक की वैल्यू की रेंज क्या है. इफ यू सी द HLB वैल्यू दैट इज प्रोवाइडेड, इट रेंजेस फ्रॉम द नॉर्मली 0 to 20. ओके, जो 20 होता है वो हाईली पोलर होता है आपका, एंड जो 0 है हाईली नॉन पोलर है. जहाँ पे आपका पोलर हेड एंड सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर देखोगे तो नॉन पोलर टेल, non-polar tail, this is the structure. अभी आप if you want to classify the different surfactants or emulsifying agents as per the HLB scale, there are a lot many categories. Like अगर आप consider करोगे, so the values that closest or near to the 0 are with respect to the hydrophobic or you can say oil soluble surfactants. If you see the value closer to the 20, these are majorly hydrophilic or water soluble. Water soluble surfactants रहते हैं. Now let's cover one chart that is with respect to the values and the category of the different surfactant agents. Like, let me draw the table. This is a very important table again. Category of the surfactant and the HLB value that is assigned for that particular surfactants. So firstly, antifoaming agent. These agents are hydrophobic and उनका जो HLB value that is ranges from the 2 to 3. Then the second category, W by O emulsifying agents. The value for these HLB agents ranging from the 3 to 6. Then third category, that is weighting and spreading agents. इसका जो value है that HLB value ranges from the 7 to 9. Then if you consider the O by W emulsifying agents, it ranges from 8 to 16. Then if you consider the detergents, which ranges from the HLB value of 13 to 15. And if you consider the solubilizing agents, जो highly hydrophilic है, solubilizing agents, उनकी जो आपकी HLB value belong करती है, that is with respect to the 15 to HN HLB value. So as per question, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि HLB value for the detergent are in the range of. Detergent अगर as per this table देखोगे तो that is normally ranging from the 13 to 15. Option A आपका
13 to 16 दिया है, ऑप्शन बी 8 to 16 है. अगर 8 to 16 देखोगे तो that is for the O by W emulsifying agent, so this option is not suitable. If you see the 7 to 9, that is with respect to the wetting and spreadability agents or spreading agent, this also option is not suitable. And 3 to 8 ऐसा कोई कैटेगरी का नॉर्मली नहीं है, बट वी कैन कंसिडर दिस एज अ हाइड्रोफिलिक एजेंट्स. सो मोर क्लोज ऑप्शन जो आपका है 13 to 16 है. So option A is the right answer for the HLB value of detergents are in the range of 13 to 16, or you can say 13 to 15. So option A is the right answer for this question. Okay, now let's move to the next question. That is, oral pharmaceutical aerosols involve the use of all propellants except. Option A is a trichloromonofluoromethane. Option B is the dichloro-difluoromethane. Option C is the dichloro-tetrafluoroethane, and option D is the isobutane. अगर इस क्वेश्चन पे देखोगे तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एरोजोल्स. एरोजोल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है प्रोपेलेंट है. प्रोपेलेंट की कौन सी कैटेगरीज है, उसमें कौन से क्लासिफिकेशन है, वो हम थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करते हैं जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस. So if you see the classification of propellants, आपके फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं फर्स्ट कैटेगरी. फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, it includes trichloro and monofluoromethane. I'm just writing the symbols Cl3F and C. Okay, this is your trichloro monofluoromethane. This is a fluorinated hydrocarbon. Again, if you see the difluoromethane is also one of the example. Then again, dichloro tetrafluoro and ethane. Okay, just for the writing purpose I'm writing like this. So आपको बस ध्यान में रखना है कि fluorinated hydrocarbons जो भी CFC सारे आते हैं, chlorofluorocarbons, that all come under this category. The second major category जो आती है या classification की, that is topical hydrocarbons. जहाँ पे भी आपको एरोजोल आपको टॉपिकल पर्पस के लिए या इंटरनेट यूज करना है, वहां पे जो हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं, in that category some of the examples like propane or butane or isobutane are used. If you see the compressor gases, so compressor gases जो propellant करके यूज होते हैं, these includes nitrogen, then carbon dioxide, then nitrous oxide, etc. ये मेजर कैटेगरीज है. अगर हम क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करेंगे तो क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग द ओरल फार्मास्यूटिकल इन एरोजोल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑल प्रोपेलेंट्स एक्सेप्ट. ऑप्शन ए ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन है, देन ऑप्शन बी इज डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन सी इज डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोईथेन. अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे अच्छे से तो आइसोब्यूटेन इज प्रोवाइडेड. और एज पर आवर इंफॉर्मेशन द आइसोब्यूटेन जो प्रोपेलेंट है वो आपका मेजर टॉपिकल के लिए यूज होता है, नॉट फॉर द ओरल लिक्विड ओरल प्रोपेलेंट्स. ओके, सो ऑप्शन डी is the not this is the propellant which is not used for the pharmaceutical oral pharmaceutical aerosols. Option D is the right answer. बाकी जो आपके CFCs तीनों भी दिए हैं, these CFCs can be used as propellants for the oral pharmaceutical aerosols. So option D is the right answer for this question. That is isobutane is not used for the oral pharmaceutical aerosols. Okay, now let's move to the next question. Again, micrometrics है, angle of repose for the flip flowing powder is. Okay, अभी angle of repose is what आपकी जो whenever you are performing the experiment of the angle of repose, आपकी जो powder कोण बनाती है with respect to the your surface, that will be called as angle of repose. and अगर आप angle of repose देखोगे तो based on the angle of repose हर एक कैटेगरी का पाउडर आपने डिफरेंट इसमें कैटेगराइज किया है. लाइक let's cover one again with respect to the angle of repose. Angle of repose and then type of flow. So based on this information we will find the answer. The first is, अगर आपका angle of repose less than 25 है, in that case your flow is excellent.
if your angle of repose is in between the 25 to 30, in that case the flow can be called as a good flow. अगर पाउडर आपकी 30 से 40 एंगल ऑफ रिपोज दिखाती है, जितना एंगल बढ़ेगा उतना मतलब पाउडर आपकी कोहेसिव है और वहां पे फ्लो करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. So type of flow is defined as the possible for the angle of repose between 30 to 40 and more than 40 अगर angle of repose है, in that case we call it as a very poor flow. अगर ये इंडिकेशन से हम चलेंगे तो we have to compare the options between the less than 20, less than 40, less above 50 and above 80. above 50 above 80 तो ऑलरेडी किसी भी क्वालिफाई ऑप्शंस नहीं करेंगे बिकॉज मोर देन 40 अगर आप कंसिडर करो तो वेरी वेरी पुअर फ्लो है. हमें चाहिए फ्री फ्लोइंग पाउडर का. फ्री फ्लोइंग पाउडर का मतलब पाउडर फ्री फ्लो कर लिए मतलब उसका इधर ऑप्शन एक्सलेंट या गुड ही होगा. तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी वैसे ही कट हो जाते हैं. नाउ कंसिडर द ऑप्शन बी. अब उसमें दिया है उन्होंने लेस देन 40. लेस देन 40 में ये कैटेगरी भी आ सकती है, दैट इज पॉसिबल. बट इफ यू कंपेयर द लेस देन 25, लेस देन 25 के लिए हमारे लिए एक्सेलेंट फ्लो एंगल ऑफ रिपोज का प्रोवाइड किया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड द फ्री फ्लोइंग पाउडर. Okay, so option A, that is less than the 20, is the right answer. Option B also does not qualify for the free flowing powder angle of repose. So option A is the right answer for this question based on the table. Just go through the table. This table is again very important with respect to the type of flow that we get based on the angle of repose results. Let's move to the next one. The particle size reduction of the substance to an extremely fine state by rubbing on a slab with the help of insoluble liquid is called as. अभी ये factual question है. Levitation is the right answer for this. Pulverization या trituration या illitration ये कोई भी option इसके लिए qualify नहीं करते. Option B, that is levitation, is the right answer for this question. Okay. Let's move to the next one. That is the unit of viscosity is. Okay, rheology से question है आपका viscosity क्या है and what is the unit of viscosity. You see the options, it is gram per centimeter per second, and then actually the options are not right provided in this question. यहाँ पे हर जगह पे आपका सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए. Like if I want to write, that is gram per centimeter inverse per second inverse in this way. Again the second one is gram per second inverse centimeter inverse, then gram per centimeter inverse per second inverse, and option D is gram per centimeter inverse per second inverse. Okay, rheology से आपका equation है. If you see the units of the this viscosity, तो यहाँ पे आपका जो यूनिट मेजरली आता है that is poise. Okay, viscosity का अगर आप अच्छे से देखोगे तो the poise is the dynamic viscosity का कोई unit देखोगे, that is a poise. So how do we define the poise is again very important. Please write the definition for the poise, so then you will understand what is the unit for the viscosity. Dynamic viscosity unit क्या है. So how do we define the poise? The shear stress required to produce a velocity of 1 centimeter per second between two parallel planes of liquid, each of 1 centimeter square in area and separated by distance of 1 centimeter. तो यहाँ पे आपका जो रेशियो आता है फॉर द डेफिनेशन ऑफ द पॉइज, उसके हिसाब के जो सीजीएस यूनिट आपकी पॉइज की होती है, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स. सो अगर ये आप ऑप्शन में देखोगे तो दिस इज द यूनिट फॉर द विस्कोसिटी दैट वी नॉर्मली प्रोवाइड फॉर द डायनामिक विस्कोसिटी. तो इफ यू वांट टू कंपेयर, द ऑप्शन ए इज नॉट सुटेबल, option B is also not suitable, but option C, that is gram per centimeter inverse per second inverse, that is the right answer to consider the viscosity unit, dynamic viscosity. बाकी अगर viscosity categories देखोगे, like relative viscosity है,
specific viscosity है, reduced viscosity or intrinsic viscosity. These viscosities are dimensionless quantities. Okay, यहाँ पे unit नहीं रहेगा. If you consider dynamic viscosity, in that case, applicable unit for dynamic viscosity is this, or another unit is also there for the dynamic viscosity, that is dyne per second per centimeter inverse. This is also another CGS unit that we use to define the poise. Okay, so option C is the right answer for this question. The unit of viscosity is gram per centimeter inverse per second inverse. Okay, let's move to the next question. That is, a satisfactory suppository base must meet all of the following criteria except. Okay, so it should have a narrow melting range, then it should be non-imitating, it should be inert, and it should melt below 30 डिग्री सेल्सियस. तो satisfactory अगर आप कंसिडर करोगे तो narrow melting range आपकी होनी चाहिए, that is agree, but non imitating या it should be inert के अच्छे से आपका जो normal body temperature उस पे वो melt होनी चाहिए. So option D, that it should melt below 30 degree Celsius, is the right answer for this question. Okay, let's move to the next one. That is, reflected energy of X-ray in a rota way is proportional to the. अभी रोटा वे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है. रोटा वे या हम उसको रोटो वे भी बोल सकते हैं. My screen is shared. Okay, it is good. So रोटोवे जो आपकी मशीन है, that is majorly used to weigh the filled capsules. Okay, आपकी जो अगर different machines जो हमने last में भी during the lectures also we discussed that different machines that are used to manufacture the capsules. उनमें हमने काफी मशीन्स enlist करी थी. उसमें आपकी रोटो वे मशीन भी है. If you see the roto weigh machine, this machine is for the capsule weighing. कैप्सूल जो आपने फिल करी है उसका वेट करने के लिए हम ये मशीन यूज करते हैं. और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दैट हाउ इट वर्क्स, द वेट इज मेजर्ड बाय reflected energy of low X-ray beam. ये जो रिफ्लेक्टेड एक्सरे है और रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है that is with the direct relation, direct proportional है with respect to the weight of filled capsule. So yes, if you revisit the question again, the reflected energy of X-ray and rota is proportional to the option A है volume of the capsule, option B है weight of the filled capsule, option C है mass of the capsule, and option D है weight of the capsule. अभी weight of the filled capsule and weight of the capsule नहीं है, आपका जो roto weigh है वो filled capsule के लिए ही हम उसका weighing करने के लिए करते हैं. So option B is the right answer for this question. Volume हम measure नहीं करते, वो mass या weight of the capsule rota weigh में हम majorly use नहीं करते by using the X-ray as a principle. ओके, अदर इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं दैट इज रोटोफिल. अगर रोटोफिल देखोगे तो दैट इज यूज्ड फॉर द फिलिंग पैलेट्स. यू सी द अनदर मशीन दैट इज रोटोसॉर्ट, दैट इज यूज्ड टू न्यूली फिल कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन है ये. यहाँ पे कैप्सूल सॉर्ट होती है. देन वेरीकैप 1200, ये भी आपका वेइंग का ही मशीन है. देन इफ यू सी द क्वालिसिल, क्वालिसिल is used to filling the liquids in the capsule shell. Then Elvica, Elvica is used for de-dusting and polishing machine. And then PM60, that is for cleaning and polishing. तो ये काफी सारी मशीन से कैप्सूल फॉर्मुलेशन में हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए. Okay, now let's move to the next question. Yes, so based on this,
The right option for the question is the weight of the filled capsules. Now let's move to the next question. Bulking agents used in the parenteral preparation is option A is sodium metabisulfite, option B is the benzyl alcohol, option C is the carbolic acid, and option D is provided as a sorbitol. Okay, तो bulking agent parenteral में जो आपको यूज होता है उसके लिए the option सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज नॉट द राइट आंसर, बेंजील अल्कोहल या कार्बोलिक एसिड नहीं है. अगर मेटाबाइसल्फाइड अगर देखोगे आप तो लेट्स cover some of the formulation components that are used for this parenteral preparations. उसके अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द डिसीजन फॉर दिस क्वेश्चन कि आपका बल्किंग एजेंट यहाँ पे कौन सा है. मेजरली आपका यहाँ पे जो व्हीकल यूज होगा वो वाटर फॉर इंजेक्शन या वाटर कैटेगरीज का होगा. प्यूरिफाइड आपका वाटर फॉर इंजेक्शन हो सकता है, स्टरल वाटर फॉर इंजेक्शन हो सकता है, देन बैक्टीरियोस्टैटिक या वो कैटेगरीज के. अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर्स को सॉल्वेंट्स विल बी यूज्ड, देन व्हीकल्स विल बी यूज्ड. उसमें आपके ऑयली हो सकते हैं या स्ट्रक्चर्ड सॉरी सिंथेटिक व्हीकल्स that we can use. Okay, then antioxidants like water soluble है तो सल्फरस एसिड रहेगा, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सारे आपके जो ऑप्शंस में प्रोवाइड किए हैं. लाइक यू कंसीडर दिस वन, दिस इज एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी. Okay, benzyl alcohol is there, carbolic acid is there, but if you see the options sorbitol या mannitol, जो आपका मेन रोल है इसका सॉर्बिटॉल का, दैट विल बी यूज्ड एज अ बल्किंग एजेंट फॉर द पैरेंटल प्रिपरेशन. सो ऑप्शन डी इज द राइट वन. कार्बोलिक एसिड या बेंजील अल्कोहल या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये उनकी कैटेगरीज वो एंटीऑक्सीडेंट की मेजरली अंडर आते हैं. सो these are not the right options. So suitable option for this question is option D, that is sorbitol. Okay, now let's move to the next one. What is the official limit for the total solid content? Total solid content आपका पूछा है from the WFI, that is water for injection. Okay, so if you see the official limit for the total solid content, अगर आपका purified water है तो the limit of the total solid content is 10 ppm. अगर आप WFI कंसिडर करोगे वाटर फॉर इंजेक्शन, उसके लिए भी आपका जो ऑप्शन है दैट इज द लिमिट है वो 10 ppm है. इफ यू कंसिडर स्टरल वाटर फॉर इंजेक्शन तो उसमें लिमिट आपके थोड़े से डिफरेंट है. लाइक अगर बिलो 30 ml आप यूज कर रहे हो तो इन दैट केस द अलाउड लिमिट इज 0.004%. अगर आपका जो क्वांटिटी है दैट इज इन बिटवीन द 30 to 100 ml, in that case the limit provided is 0.003%, and if the quantity is more than 100 ml, in that case 0.002% limit is accepted or allowed. Okay, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर कंसीडर करोगे तो उसमें कोई भी सॉलिड डिसॉल्व होना चाहिए. Okay, even for the sterile water for injection as well as sterile water for inhalation. So yes, based on this option or this information we can say that water for injection का जो आपका total official limit है for the total solid content is provided 10 ppm. So option D, see the 10 ppm is provided. Option D is the right answer for this question. 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm are the not suitable options. Okay, let's move to the next one. डैश 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 इज म्यूको अडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम. म्यूको अडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपका ये जो अडेजन है वो विद इन द बकल कैविटी पे होता है या जहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, मोस्टली ओरल में ही हम यूज करते हैं. तो इस केस में इफ यू सी ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी वेरापामिल, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल, ये दोनों भी आपके एपीआईज है जो कार्डियोवास्कुलर में बीटा ब्लॉकर्स करके प्रोपेनॉल हम यूज करते हैं. दिस इज एसीई. सो option B as well as option C are right, and even nitroglycerin we are also using. So option D, that is all of the above, is the right answer for this question. Question number 17. This is again factual question. Let's move to the next one.
इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन द ड्राइंग प्रोसेस इज, स्मॉल वैक्सीन का अगर देखोगे तो जो ड्राइंग हम एम्प्यूल्स का करते हैं दैट इज विद द फ्रीज ड्राइंग. सो स्प्रे ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग या ड्रम ड्राइंग हम कहीं पे करते नहीं है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज अ फ्रीज ड्राइंग. This is the operation we are performing to dry the smallpox vaccine. Let's move to the next question. That is, in spraying process, which of the following step is eliminated in sugar coating? Now, this question is again thoda sa like doubtful question है. Like if you see the seal coating, sub coating and polishing and smoothing, ये सारे के सारे options ही आपके itself sugar coating में हम use करते हैं. But यहाँ पे उन्होंने पूछा है that is with respect to the spraying. Okay. So अगर spraying की हम बात करेंगे तो then if you see the sugar coating steps that are involved in the coating operation, उसमें आपका seal coating आता है. That is for the preventing the moisture penetration. Okay, आपका जो tablet का core है उसको seal करने का उसका purpose है. Then sub coating if you see उसका sub coating में आपको जो edges वगैरह round करनी है tablet की, तो and weight buildup के केस में यूज करते हैं. Polishing is option. Polishing में जो हम करते हैं उसके जो टैबलेट की फिनिश में एंड में जो आपका अपीयरेंस है और वी कैन से द लस्टर इज कंट्रोल बाय द पॉलिशिंग. इफ यू सी द स्मूथिंग या इस स्टेज में हम कलरिंग भी करते हैं. सो स्प्रेइंग के केस में अगर आप देखोगे तो स्प्रेइंग के केस में स्मूथिंग या कलरिंग के ज्यादा चांसेस नहीं है. वहां पे हम इम्परफेक्शंस कवर करने के लिए ये ऑपरेशन नॉर्मली किया जाता है. सो इफ यू सी द ऑप्शन स्मूथिंग इज द राइट आंसर, दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन द स्प्रेइंग प्रोसेस. So this can be eliminated. बाकी seal coating, sub coating and polishing हम normally perform करते हैं. Okay. Let's move to the next one. That is carnauba wax is used in the following step of the sugar coating. Okay. अभी seal coating जैसे हमने initially डिस्कस किया था कि seal coating is to prevent moisture penetration. तो but seal coating के अगर agents देखोगे कौन से use होते हैं तो वहाँ पे zein is majorly used. Okay. Then shellac. Then PG 400 is also used. ओके. सब कोटिंग के अगर आप देखोगे या सॉरी सिरप कोटिंग के, in that case the agents that we are using are glossing syrups, normal syrup का ही हम कोट करते हैं. If you see the polishing agents that we are using are included as beeswax, then candida wax, then carnauba wax, naphtha or hard paraffin. These are some of the agents that we are using for the polishing purpose. आपकी जो appearance है वो दिखाने के लिए. And if you see the sub coating, the agents that we are using for the sub coating are gelatin, acacia, kaolin, cocoa, and starch. ये normally होता है. If you see the question, the carnauba wax is used in the following step of sugar coating. So carnauba wax अगर देखोगे आप, so that is for the polishing purpose. Option C is the right answer for this question. Let's move to the next one. That is, which company has made first film coating tablet? सबसे पहले जो polymer का application use किया, that is the company called Abbott. Abbott ने सबसे पहले मार्केट में फिल्म कोटेड टैबलेट लाई है. GSK, Pfizer, Johnson and Johnson. This is again a factual question. So option B, Abbott is the right answer for this one. Let's move to the next one. That is again material used in IUD. IUD stands for the intrauterine devices. Okay, यहाँ पे जो मटेरियल यूज करते हैं, जो मेटल यूज होता है, दैट इज कॉपर, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम के हम कौन से भी मटेरियल यहाँ पे आईओडीज या डिवाइसेस में यूज नहीं करते. कॉपर is option right option for this question. Option A is the right one. Then next one, drop weight method is used to measure. अभी इसमें viscosity दिया है, specific volume दिया है, surface tension दिया है, solubility दिया है. Viscosity अगर आप देखोगे तो viscosity can be calculated or measured by different viscometers. यहाँ पे ओसवाल्ड विस्कोमीटर आपका हो सकता है, कप एंड बॉब हो सकता है, कोन एंड प्लेट हो सकता है. देन ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज आल्सो देयर. ओके.
बट विस्कोसिटी के लिए ड्रॉप वेट करके मेथड हम यूज नहीं करते, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए भी नहीं है। इफ यू सी द सरफेस टेंशन, देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट वी आर यूजिंग टू मेजर द सरफेस टेंशन। उसमें आपकी चार मेजर मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज कैपिलरी राइज मेथड, then tensiometer, which is also called as the denoising method, denoising method। इसमें प्लैटिनम इरिडियम आपका असली ट्रीटेड रॉड होता है। then bubble pressure method, that is apparatus we are using is manometer, and fourth one is drop weight or drop count method. Here we are using the stalagnometer. Yes, so if you see, then surface tension में जो मेथड होती है वो ड्रॉप वेट मेथड यूज करती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द ड्रॉप वेट मेथड इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, वाटरमेलन फिल्टर पेपर 42 हैज पोर साइज ऑफ। बॉटम पेपर 42 दिया होगा, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन। द 42 का जो साइज आपका पोर साइज का दैट इज 0.425 माइक्रोमीटर। यहाँ पे टाइप हो रहा है, सो 8 मीटर 10 मीटर और 20 मीटर आर नॉट द ऑप्शन। 2.5 micrometer is the right answer for this question, so you can go with the option D, that is 2.5 micrometer is the pore size for the water filter paper, that is of the number 42. Okay. Yes, in order to prepare the novel drug delivery system आपको बनानी है from the release erythrocytes. Erythrocytes are nothing but the RBCs. Okay, the erythrocytes for the purpose of loading the drug are placed in, यहाँ पे हाइपरटेनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक यूज करते हैं। भाई व्हाई वी आर यूजिंग द हाइपोटोनिक? बिकॉज इफ यू यूज द आरबीसीज फॉर द लोडिंग, हाइपोटोनिक में आपका जो ड्रग का लोडिंग कैपेसिटी है that is tremendously increased if you keep the आरबीसीज इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वहां पे आपकी ड्रग लोडिंग, आप ज्यादा ड्रग डिलीवर कर सकते हो, डिलीवरी का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। फॉर दैट पर्पस वी आर ट्रीटिंग एंड वी आर कीपिंग द आरबीसीज इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो इफ यू सी द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम आरबीसीज को रखते नहीं है। ऑप्शन बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, compressed gases that are used as a propellant for the aerosols। ओके, ये हमने प्रीवियस भी एक अपना क्वेश्चन आया चुका है बेस्ड ऑन एरोसोल्स। दिस वन। ओके, सो आइसोब्यूटेन यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हमने कवर किया था। कंप्रेस गैसेस में आपके नाइट्रोजन, CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स हम एज कंप्रेस गैसेस यूज करते हैं। तो इफ यू सी द क्वेश्चन अगेन केयरफुली, द कंप्रेस गैसेस, इसमें CO2 आपका है, नाइट्रोजन है और नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों भी ऑप्शन प्रोवाइड करके रखे। सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस प्रोपेलेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ कंप्रेस गैसेस फॉर एरोसोल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Okay, let's move to the next question. That is a vehicle for the parenteral preparation which possesses the antioxidant activity. Antioxidant activity जो है, option A is ethanol, option B is olive oil, option C is sesame oil and option D is a cotton seed oil। यहाँ पे आपका जो option है sesame oil is having additionally antioxidant property। So the right answer for this question is option C, sesame oil। Actual question है again।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स एम्प्लॉयड फॉर द एंट्रिक कोटिंग। अभी एंट्रिक कोटिंग मतलब क्या है, आपको टैबलेट कोटिंग करनी है जहाँ पे आपका जो ड्रग डिलीवर की जो टारगेट साइट है, वो टारगेट साइट आपकी इंटेस्टाइन है, मतलब आपको वहां पे टैबलेट जाके शुड डिसॉल्व फिल्म कोटिंग, वहां पे डिलीवर होना चाहिए। ओके, सो इफ यू सी द डिफरेंट एजेंट्स दैट वी आर यूजिंग फॉर दिस film coating, we'll cover it right down. Just normally जो एजेंट्स हम यूज करते हैं एंट्री कोटिंग के लिए, इट कंटेन्स shellac, zen, then cellulose acetyl, that is cap, then acrylate polymers, majorly eudragites. So if you see the again, if you see the questions and the question and the options that are provided, shellac, Jain, starch, and HPMC. Normally, shellac and Jain, as per our information, that we can be used for the enteric coating. HPMC अगर देखो तो HPMC आपका फिल्म कोटिंग में यूज होता है, बट it is the role is not so much clarified with respect to the enteric coating आपका कहाँ पे यूज होगा. But if you see the option A as well as option B, both Zain and Shellac can be used as the uh, enteric coating polymers. Okay, let's move to the next one. That is, soft gelatin capsules are dried by. So यहाँ पे फ्लूइड ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग या माइक्रोवेव ड्राइंग से हम सॉफ्ट जेलाटिन की जो कैप्सूल्स बनती है वो ड्राई करते नहीं है. नॉर्मली जो ड्रायर यूज करते हैं फॉर सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल इज टम्बलर ड्रायर. So most suitable option for this question is with respect to truck drying. Option A, fluid drying or vacuum drying or microwave drying are not possible, and these operations we do not use. Let's move to the next question. That is, a brown tube is used as indicator in dash dash sterilization. Microbiology से direct question है. आपके जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स और केमिकल इंडिकेटर्स हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, वहां से ये एरिया उन्होंने टारगेट किया है फॉर दिस क्वेश्चन. This is again very important section to cover. जो टेक्निक यूज करते हैं वो मेजरली ड्राई हीट, moist heat, gas sterilization, then radiation, and filtration is also used. ओके, अगर मैकेनिज्म देखोगे तो ड्राई हीट का जो मैकेनिज्म है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स. मॉइस्चर अगर कंसीडर करें तो डीनेचुरेशन आपका होता है एंड कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स यहाँ पे होता है परफॉर्मेंस. गैसेस, इफ यू से द अल्काइलेशन इज द मेजर mechanism to sterilize any molecule. रेडिएशन में आपकी न्यूक्लियोप्रोटीन डैमेज हम करते हैं of around wavelength of 256 nanometer, or a second of free radical formation. And if you see the filtration, retention of the bacteria on the filter paper or filter media, that is the main principle of this sterilization process. Okay, if you see the biological indicators as well as chemical indicators, dry heat का जो chemical indicator है that is a brown tube. Okay, dick heat sensitive tapes are also used as a chemical indicator for this technique. If you see the chemical indicator for the moist sheet, यहाँ पे stripe paper हम use करते हैं as a chemical indicator.
Then for the gaseous, Royce sachet. Then if you see the radiation, for radiation purpose, dosimeters are majorly used as a chemical indicator for this type of technique, sterilization. And if you see the filtration, then Pseudomonas diminuta or Serratia marsens can be used as the chemical indicator. So if you see the question again, brown tube used as the indicator in sterilization. So moisis का अगर देखोगे तो moisis का आपका स्ट्राइप पेपर है, रेडिएशन में अगर देखोगे तो रेडिएशन में डोसीमीटर हम यूज करते हैं, केमिकल ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट अगेन द राइट ऑप्शन ब्राउन ट्यूब इंडिकेटर जो आपको ड्राई हीट का है. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस वन इज dry heat. Apart from that, biological indicators that we are using for the dry heat are Bacillus subtilis, Niger variety ka. Then for moist heat, it is a Bacillus thermophilus or Clostridium sporogenus that we are using as a biological indicator. If you use the gas sterilization, again the same indicator that we are using for the dry heat के लिए जो biological indicator हम use करते हैं, that is a Bacillus cumulus, and filtration के लिए bubble point test can be used as a biological indicator. This is again very important point, biological point or bubble point test. So yes, option A, there's a dry heat, इसमें आपका brown cube as a हम chemical indicator use करते हैं. Option A is the right one. Let's move to the next question. That is, the shell of soft gelatin capsule may be made elastic or plastic by addition of. Okay, तो अभी यहाँ पे जो प्लास्टिसिटी एनहांस करने वाले या प्लास्टिसिटी आपके शेल को प्रोवाइड करने वाले काफी सारे एजेंट्स है. We will cover some of the agents that we are normally using in the soft gelatin capsules. So sorbitol A is the right answer for this question. Then again, let's move to the next one, that is for pyrogen test. Which animal taken is for the experiment? Pyrogen testing आपको जो है वो हम मेजरली रैबिट से यूज करते हैं. वी आर यूजिंग द रैबिट एनिमल टू परफॉर्म दिस pyrogen testing. We pyrogens are simple, nothing but the pure producing substances. And का केमिकल अगर स्ट्रक्चर आप देखा चाहोगे तो these are lipopolysaccharides. Okay, so rabbit is the animal that we are using for this pyrogen testing. अभी ये टेस्टिंग करते कैसे है और उसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है. Some of the facts that with respect to this pyrogen testing I'm enlisting, that whenever we are taking the single dose of injection, that should be almost greater than or equal to the 15 ml. The animal that we are using is also, as we discussed, is a rabbit for this test. The preliminary test of the pyrogen test is called a sham test. The sham test we are using to select the rabbits then जो sample हम inject करते हैं for pyrogen testing, that we are injecting into the marginal car vein.
of rabbits. And again, जो temperature variation है with respect to these subjects or with respect to these rabbits, that should not be the more than 0.6 percentage. So again, animal showing the temperature variation of the 0.6 percentage should not be used for the cement test. So again, temperature variation को आपको पैरामीटर ध्यान में रखने का पड़ेगा, जो जहाँ पे आपका 0.6% से वेरिएशन दिखाएगा कोई रैबिट temperature variation दिखाएगा, in that case we cannot use such animal for the testing of in the pyrogen. Okay, so yes, the right option is we are not using rat or cat or hamster. The right option for this is we are using the rabbit to perform the pyrogen test. Next question, the resolution time for mouth dissolving test tablets is, okay, so mouth dissolving tablets इसमें super disintegrant हम use करते हैं, and because of this super disintegrants our tablet disintegration property as well as dissolution properties tremendously increasing. So if you see the options, less than 3 minutes, only 40 to 50 seconds, 3 4 minutes, and 5 minutes. So option B, that is only 40 to 50 seconds, is the right answer for this question. Okay, so these are some of the paper discussion or MCQ discussion points for the today. Rest of the subjects and questions we will discuss in the next lecture. Okay, thank you very